Hello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome or welcome back to my channel. This is Zeva and I'm glad you're watching me right now. Thank you so much for being so much patient first of all that you wait for my videos. अब जो नहीं करते मैं उनको नहीं कह रही, बट ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आते हैं कि आप कब वीडियो डाल रहे हो, आप एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो कब डाल रहे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं. तो यस, फाइनली आई एम हियर विथ अ लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब बैक अगेन. I keep saying that I'm very inconsistent, but from past few weeks or maybe a week, I have tried being very consistent. I have also posted a lot of shorts. I am doing this 30-day challenge of mini vlogs wherein I show you bits and pieces of my journey during my work hours. So if you guys haven't watched that, please go and watch all of that also. अब रही बात इस वीडियो की, एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग. आई हैव टोल्ड दिस इन माई रिसेंट ब्लॉग ऑल्सो दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड आई एम नाउ रिलीज्ड एज अ फर्स्ट ऑफिसर. सो आई एम फ्लाइंग एज अ फर्स्ट ऑफिसर विद इंडिगो. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ पार्ट 2 वीडियो ऑफ द फर्स्ट वीडियो दैट आई पोस्टेड वेयर इन आई शेयर माई पायलट जर्नी, जहाँ पे प्लीज़ इग्नोर जितना भी नॉइज़ आ रहा है क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ एंड ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे का पूरा शोर एकदम अच्छे से सुनाई देता है, तो इग्नोर दैट. हाँ, तो मैं कहाँ थी? तो येस, आई एम गोइंग टू शेयर माई पार्ट 2 जर्नी. तो आई हैड फ्रॉम वेयर आई हैड स्टॉप्ड, आई विल पिक अप फ्रॉम देयर एंड टेल यू कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया टिल द टाइम आई गॉट इनटू इंडिगो. मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँ, ब्रूटल रहूँ, कि मेरे साथ एग्जैक्टली जो हुआ मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी एविएशन बैकग्राउंड पीपल एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फील्ड, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर मी to cope up with a lot of things. So the mistakes that I do, I have always wanted कि people who are watching me learn from my mistakes and do not do the same. So let's start with this video without wasting a lot of time and I will pick up from the point where I stopped in my last video. So the previous video में मैंने आपको वहाँ तक की कहानी बताई जहाँ मैं दिल्ली में थी and while I was in Delhi, during the end days of my Delhi journey, I had appeared for Indigo Cadet Pilot Program, thinking that I could be a part of the cadet so that I don't have to बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें जॉब मिलेगी ट्रेनिंग करने के बाद, इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, डू यू थिंक दैट वी हैव अ जॉब गारंटी. तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस एंड सवाल मेरे भी मन में थे. इवन आई वाज स्ट्रगलिंग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आई डिसाइडेड एट दैट पॉइंट back in 2019 or 20 that I will गो इन फॉर कैडेट पायलट प्रोग्राम ताकि मुझे फिर जॉब के लिए कुछ जद्दोजहद ना करना पड़े. आई डोंट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग बट आई कुड नॉट क्लियर माई ग्रुप डिस्कशन विच वॉज अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग. बट कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. वो नहीं होना ऑल्सो हेल्प्ड मी बिकॉज सून आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम डेली द नेक्स्ट डे वी वेंट इनटू अ लॉकडाउन. इट वॉज अ 21-day लॉकडाउन एंड इट कंटिन्यूड, आप सबको तो पता है. तो देर आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years ऑफ माई पायलट ट्रेनिंग जर्नी क्योंकि मैं थी घर पे, आई वॉज नॉट फ्लाइंग. उसके बाद आई डिसाइडेड आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लॉकडाउन, जब ख़त्म हो गया, कि आई विल गो बैक टू द फ्लाइंग स्कूल दैट आई ऑलरेडी जॉइंड, दैट इज़ इन भुवनेश्वर. आई डिसाइडेड टू गो देयर एंड स्टार्ट माई फ्लाइंग बिकॉज सिटिंग हियर डूइंग नथिंग was of no use. Talking about my papers, I had cleared all my papers. I was left with 2 papers, which was navigation and technical general, and I was sure that I could go there and with my flying I could finish my papers also. So I decided कि now it's time for me to go back and start my flying. अब क्योंकि कोविड चल रहा था, ये सब चीज़ें हो रहे थे, तो हमें वो 14-day क्वारंटीन में रहना पड़ा. तो मेरे साथ ना ऐसा टाइम वेस्ट बहुत हुआ है, इज बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू से, कि आई वॉज अ लॉट ऑफ I wasted a lot of time and even if I didn't, किस्मत ने ऐसी चीज़ें की कि बहुत टाइम वेस्ट हुआ. फाइनली when the school could reopen and we started our flying,
I realized that things were going very, very slow and it was not going according to me. I was in a stage where I was about to get released solo, and उस टाइम पे ऐसे होता है कि आपको रेगुलर फ्लाइंग चाहिए होती है क्योंकि आपकी ना वो आदत छूट जाती है. एंड पहली बार आपको सोलो भेजने के लिए इंस्ट्रक्टर को भी आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद को भी अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एंड वो बनाए रखने के लिए यू नीड टू हैव रेगुलर फ्लाइंग. दैट्स व्हेन यू नो कि ओके यू हैव अ हैंग ऑफ इट. तो वो मेरे साथ नहीं हो रहा था, नॉट जस्ट विथ मी, विथ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. इट वॉज नॉट हैपनिंग. वी वर नॉट गेटिंग रेगुलर फ्लाइंग, वी वर नॉट गेटिंग टू फ्लाई रेगुलरली, विच वॉज गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो. एंड यू नो बहुत सारा वैसे फीलिंग आ रही थी कि यार होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा. तो ऐसे सब सिचुएशन में थोड़ा सा ना माइंड खराब हो जाता है, यू गेट अ लिटिल डिस्टर्ब्ड. वैसा ही मेरे साथ भी हुआ. एंड बिकॉज आई गॉट अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, आई डिसाइडेड टू कम बैक होम, spend some more time, make a proper decision, take one step that would be in my favor and not waste time, because I'd already wasted a lot of time giving my papers in Delhi, then the lockdown, then the quarantine there and all of that. Everything was getting onto my nerves and I didn't want to waste any more time. So what I decided when I came back home was, let me think, let me analyze stuff and see that what works for me. Oh god, सबको आज ही साफ करना है. Anyways, so then I started looking for options. Like a lot of y'all asked me, do we go abroad and complete our flying and come, or do we do it in India? I also had the same questions, the same queries. I spoke to a lot of people. I spoke to a lot of flying schools abroad. I spoke to people in South Africa, Florida, everywhere. But nothing really was working out for me, because you know what, financially also you need to be pretty strong. Like you need to have that amount in your hand to do anything. We didn't. Like if I had to go fly from South Africa or from Florida, it would be a thing that you need to pay in installments, and you have a huge amount to pay in installments, and we wouldn't have that much amount in hand right then. So that was also one problem for me, that I could not go to South Africa or Florida because a lot of amount would go in one go. And thanks, a lot of amount would go in one go and उतना था नहीं पैसा हमारे पास. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इंडिया में ही फ्लाइंग करते हैं. एंड I spoke to a lot of instructors of mine, friends of mine, and then one friend of mine had joined a flying school in Jamshedpur. तो वहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी चल रही है, कम स्टूडेंट्स है, इंस्ट्रक्टर्स ज़्यादा है, इनके पास 4 एयरक्राफ्ट है, आई गेस यू नीड टू ट्राई हियर. तो फिर मैंने सोचा उस बारे में, आई थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया, एंड देन आई जस्ट लेफ्ट फॉर जमशेदपुर. तो यहाँ पे मेरी फ्लाइंग स्कूल शिफ्ट की कहानी स्टार्ट होती है. मैंने इस वजह से अपनी फ्लाइंग स्कूल शिफ्ट किया, जो कि प्रॉब्लम होता है क्योंकि यू आर यूज टू वन पर्टिकुलर, यू यूज टू दैट एयरफील्ड, यू यूज टू दैट एयरक्राफ्ट. एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ प्री सोलो स्टेज, जब आपको सोलो रिलीज होना है, आप वहाँ जाओगे, वहाँ के एयरफील्ड से फेमिलराइज होगे, एयरक्राफ्ट से फेमिलराइज होगे, सब चीज़ें टाइम लगती है. तो फिर वहाँ पे भी मेरी फ्लाइंग थोड़ी सी डिले हो गई, क्योंकि आप वहाँ पे सीखोगे, समझोगे, तब जाके आपको सोलो रिलीज करेंगे. तो वहाँ पे भी मुझे सोलो रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लग गया. But nevertheless, we did it well, and I got solo released there, and I decided to continue my flying, all my flying from Jamshedpur, because it was convenient, it was good, the instructors were good while I was flying, the atmosphere was good. We had pretty well aircrafts, the number of students were not too much, so we would get flying regularly. I was flying regularly there, I would fly every day. In fact, in a day I would go for 2 or 3 sorties also. So according to me, things were going perfectly fine, and I continued my flying training from Jamshedpur. So like I said, I was left with 2 papers. I forgot to mention that while I was in Bhubaneswar, I cleared 1 paper, which is my technical general, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे तो कुछ करने को था नहीं, तो पढ़ाई लिखाई ही थोड़ी बहुत कर ली, एंड वो चीज़ हमने वहाँ पे क्लियर कर ली. I cleared my technical general, and now I was left with just 1 paper to clear, and now I was in Jamshedpur. फ्लाइंग अच्छी हो रही थी, रेगुलरली हो रही थी, एक ही पेपर बचा था, तो सब बहुत अच्छा चल रहा था. अब मैंने गलती क्या की इज आई डिलेड माई फ्लाइंग माई सेल्फ फॉर सम टाइम.
Like there was a time when I was not really doing great, so I decided that it is not the right time for me to fly. I took a break there. Then I decided that that one paper that is left, it should not take much time. So I thought of going back to Delhi and taking one last class. I had not taken for that paper, so I decided to take one last class so that in one go I'm clearing that paper and I'm not getting stuck with it. So I again left my flying in between. This is where I went wrong. Do not leave your flying in between. Either complete all your papers and come back for flying, or while you're flying, if you're giving your papers, make sure you're giving in the equal importance for your studies also as well as flying. It's not really easy. मेरे नाक में क्या हो गया यार? Sorry. It is not very easy to fly and to study, but if you're deciding to do that, it's not impossible also. You can, but make sure you're giving equal importance to both the fields. So when I went back to Delhi and decided to take classes again, and during the time I was taking classes, फिर से lockdown पड़ गया. Okay, so I was trying to edit this vlog now and I realized that the video was too long. I've completed the entire story, but if I would upload the entire thing now, it would go till 30 minutes or so, and I didn't want कि उतना लंबा vlog जाए. So I will cut it here. Sorry for the abrupt ending of the vlog, but I will come up with the part 3 soon क्योंकि already shoot करके रखा हुआ है, बस edit करके डालना है. अभी तक ये part 2 की कहानी थी. This is the time till I went back home due to the second lockdown, and second lockdown से बाद की कहानी I'll continue in the third part. Stay tuned, बहुत जल्द आएगा. And guys, एक और चीज़ कि हर चीज़ जो बताई है ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है. ज़रूरी नहीं है कि ये सेम चीज़ें आपके साथ हो. Learn from my mistakes and do not do the same mistakes is all that I want you all to learn from this particular video. So thank you so much for watching. I'll see you in the third part pretty soon, and bye bye.